Can we start? Yeah. Now this research process which I had mentioned earlier, we are going to define them into 7 steps. ये 7 steps आगे जाके आपको हर एक स्टेप का एक एक चैप्टर है, ठीक है? एंड आई विल गिव यू नोट्स. अगर आपको ये पावर पीपीटी वाला पढ़ा तो ही काफी है. आई हैव गिवन यू इन डिटेल नोट्स, आई हैव नॉट गिवन यू इन पॉइंटर form. Ideally, 7 broad steps of research are: define the research problem. You will have to identify what actually is a research problem or research question. किसके ऊपर research करना है? Crime rates in women in metropolitan city. Supposing this is my topic. ठीक है? Are you able to follow? I'm giving you an example so that it's easier for you to understand. Crime rates on women in metropolitan cities. Now I will review the literature. Literature मतलब इसके पहले भी लोगों ने women studies के ऊपर किया होगा, right? So वो literatures को I am reviewing. I'm going to see how many people have studied on this, which different cities, and what are their ways of studying. कौन से साल में पढ़ा है, किसने पढ़ा है, and what have they suggested. कौन सा कैसे डेटा लिया है, क्या टूल अप्लाई किया है, कैसे एनालाइज किया है उन्होंने, एंड देन व्हाट इज देयर कंक्लूजन, व्हाट इज देयर रिकमेंडेशन. तो मेरे मन में एक आइडिया फॉर्म हो जाता है. मैंने अगर 100,000 स्टडीज पढ़ा तो सिर्फ 50 स्टडीज आई गो थ्रू ऑल्सो. 50 लोगों का ये टॉपिक के रिसर्च का मैंने पढ़ा है, राइट? देन आई गेट एन आइडिया, स्ट्रॉन्गर आइडिया इन माई माइंड. तो मुझे एक फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है. So I formulate a hypothesis. I say that supposing I choose Mumbai city, I formulate the hypothesis that Mumbai is a safer city in terms of for women, in terms of crimes against women. Supposing this is my feeling, I am going to formulate this hypothesis. Even after 6 p.m. they can safely go out of the house. Technically hypothesis कैसे formulate करते हैं, क्या टर्म्स यूज करते हैं, ये मैं आपको जब हाइपोथेसिस टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, वहां पे मैं बताऊंगी. आर यू फॉलोइंग? दिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू फॉलो थ्रू आउट द रिसर्च. आई रिपीट द स्टेप्स. आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम. इट इज ऑन crime rates on women. So when I talk about crime rates on women, I'm going to define my research problem on crime against women in metropolitan cities. And I'm going to see the past studies that have been conducted by various other people who have researched. And then I'm going to formulate a hypothesis. Tentative statement. मैं इतने सारे पढ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है कि in a city like Delhi, after 6 it is not safe for women to step out. मेरे मन में ये बैठ गया, तो इसको मैं hypothesis form में convert करके I am formulating a hypothesis. Are you following? Yes, ma'am. Okay. And then I prepare a research design. Research design जो है, it's a blueprint of the entire research. मतलब जो मैं रिसर्च करने वाली हूँ एग्जैक्टली, लाइक हाउ मेनी मंथ्स एम आई गोइंग टू फिनिश द रिसर्च इन, हर एक स्टेप का कितना दिन लगने वाला है, डेटा कौन से सोर्स से निकालने वाली हूँ, डेटा कलेक्शन के लिए कितना
मंथ्स, डेटा एनालिसिस के लिए कितना मंथ्स, लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कितना महीने लगेंगे, ये सारा मैंने एक क्या क्या करने वाली हूँ, क्या कितने टाइम में करने वाली हूँ, इसका एक ब्लूप्रिंट बनाऊंगी. दैट इज कॉल्ड एज रिसर्च डिजाइन. I may need a pilot study also. Pilot study बोला तो, see supposing I intend to do it at a very large scale, right? मुंबई में 4 इलाकों में करने वाली हूँ. से ताने, वेस्टर्न सबर्ब्स, एंड देन सेंट्रल हार्बर, राइट, एंड सिटी. यहाँ पे करने वाली हूँ. तो इट इज गोइंग टू बी एट अ लार्जर स्केल. से 1000 सैंपल्स के ऊपर करने वाली हूँ. सो आई एम गोइंग टू prepare as to how I am going to do this. Are you following? कितने महीने डेटा कलेक्शन के लिए, कितना महीना रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए लेने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट. घर का ब्लूप्रिंट देखा है आपने? अगर आप घर खरीद रहे हो, वो प्लान बना के देता है बिल्डर. देखा है आपने? Exact sketch of what the house is going to look like. Where is your kitchen? How big is it? Where is your balcony? Where is your bedroom? Where is your living room? कितना बड़ा है, ये सब देगा. कितने लिफ्ट है, etc. Right? So that is what is a research design. Data collection. Data का source. What is the sample size? What is the population comprising of? What is the sample I'm going to choose? How many samples I'm going to choose? What is the age group of sample, etc. Right? उसके बाद ये डेटा को मैं कैसे एनालाइज कर रही हूँ, टूल्स लगाना पड़ेगा. परसेंटेज में डिस्क्राइब करने वाली हूँ, या टैबुलेट करने वाली हूँ, ग्राफ करने वाली हूँ, या देर आर मोर एडवांस टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, वो भी उसमें से कुछ करने वाली हूँ क्या, क्यों करने वाली हूँ, एक्सेट्रा. राइट? एंड देन आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा, आई एम गोइंग टू इंटरप्रेट वट एवर आर माई फाइंडिंग्स. मुझे एक वैल्यू आएगा, व्हाट इज दैट वैल्यू सिग्निफाइंग. If I get 50% of the people say Thane area is not safe after 6 p.m. Right? 50% of the people say that city side or South Mumbai is not safe for women after 6 p.m. etc. And then जो भी मेरा findings आया है, डेटा इंटरप्रेट करके हो गया है, उसको मैं प्रॉपरली, आप ये ब्लैक बुक देखा है अपने डिपार्टमेंट में, आई एम गोइंग टू डॉक्यूमेंट इट in a proper format that is given, and then finally attach a bibliography. कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से वेबसाइट्स मैंने रेफर किए हैं पूरे रिसर्च के लिए. आर यू फॉलोइंग? I identify and define a research problem, review the literature studies, past research, formulate a hypothesis which gives me a focus, and I prepare a research design, which means a blueprint of what I'm going to do, how I'm going to do, when I'm going to do what, etc. Collect data, analyze the data, interpret whatever is my data giving me, and then report the findings of my data in a proper format. Are you following? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We proceed. Okay. This is what I have listed down. ठीक है? Identify the problem, review of literature, clarify the problem, what exactly it is. बराबर आपको clarity देना है. Supposing crime rate, what do I mean in my study by crime rate? I cannot blindly say crime rate. Crime could be eve teasing, rapes, etc. Right? What exactly? Define each and every term. When I say adolescent women or adolescent girls are not able to step out of the home, define that adolescent. हर एक term and concept मुझे define करना होगा according to my study. Are you following? Define the population. Population talks about, yes, people or women residing in Mumbai city. Ma'am, हाँ बोला. adolescent means? Adolescent means that stage, वो teenage stage में आप आते हो ना. You go through a lot of, you are neither a child nor an adult. In between phase उसको adolescent बोलते हैं. Right? Okay. 14 से 13 से लेके 19 तक, you are not 18 तक भी पकड़ो. You are neither an adult Okay. nor a child. Okay?
Thanks, ma'am. No problem. Yeah. So clarify the problem. Clearly बताओ ये age group में मैं करने वाली हूँ 18 to 40. These women succumb to a lot of violence. What are these? And then define all the terms and concepts that you are using in your study. Like I told you, adolescent, teenager, right? Adult बोला तो 20 plus. In my study, I've considered them as adult. ठीक है? And define population. What is the population that you are going to study? People residing in Mumbai is population for me. ताने में हर एक को जाके मैं सर्वे नहीं कर सकती हूँ. Say, I will say 100 people from Thane will be my sample. समझ में आ रहा है? My population comprises about people residing in Thane district. My population comprises about people residing in harbor suburbs. Right? Are you following? 5 एरिया से मुझे स्टडी करना है तो ये पांचों को मैं डिफाइन करूंगी. डेवलप एन इंस्ट्रूमेंटेशन प्लान, मतलब कैसे कैसे करने वाली हूँ. डेटा इज गोइंग टू बी कलेक्टेड यूजिंग गूगल फॉर्म. They are going to be consolidated using the Google. I mean, it is going to be converted to Excel in the Google. And I'm going to apply these tools. And after that, ये सब develop करके आप data actually collect करने लगते हो. Then you analyze the data. Any doubts so far?